शास्त्री प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम रहेगा, दिस विल बी मोर अबाउट ओरिएंटेशन। भक्ति शास्त्री क्या है, शिला प्रभुपाद ने इसके बारे में क्या बताया और 4 किताबें कौन सी हैं जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ ये भक्ति शास्त्री का प्रोग्राम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, जो ऑनलाइन हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। सो बोथ अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस होल भक्ति शास्त्री एंड एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे होगा उसके ऊपर चर्चा रहेगी। साथ ही साथ we'll also have a discussion on how to study Srila Prabhupada books, why to study Srila Prabhupada books, क्योंकि हम काफ़ी समय से भगवद गीता हो, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इत्यादि या श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करते आए हैं। So I thought we are starting a formal program. So let's have some discussion about how to study Srila Prabhupada books. क्योंकि कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो उनको थोड़ा भय था एग्ज़ाम का। So I had to talk to them and tell them कि ये कोई आपका स्कूल या कॉलेज एग्ज़ाम जैसा नहीं है। There is nothing like, you have to get the highest marks or something. Even if you get the highest marks, you get the passing marks, you get the same certificate. Just to let you know, okay? As far as I don't remember, there is something written passed with distinction or something like that. ये वैदिक पद्धति का तरीका नहीं है. So the whole objective that Srila Prabhupada wanted, the idea is Srila Prabhupada चाहते थे कि जितने भी भक्त हैं वो प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई किताबों को ढंग से पढ़ें. प्रभुपाद ने अपने समय पर बुक वितरण पे काफ़ी जोर दिया था और लोगों ने बड़े उत्साह से बुक वितरण करा भी था. पर कई बार अनुभव ऐसा रहा कि जब कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछता था कि बुक में लिखा क्या है, तो कई बार हमारे भक्तों का जवाब रहता था, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी तो हम बेच रहे हैं. तो दैन श्रीला प्रभुपाद सेड, अभी तो बहुत लंबे समय तक चल चुका है बुक वितरण. नाउ आवर डिवोटीज हैव टू लर्न दिस बुक्स जस्ट लाइक अ लॉयर, ही नोज द कंटेंट ऑफ द लॉ बुक्स. उस प्रकार से हमारी बुक पढ़ी जाए. तो तब श्रीला प्रभुपाद ने ये भक्ति शास्त्री, which is a fundamental program, जिसके अंदर 4 प्रमुख किताबें, भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत एंड भक्ति रसामृत सिंधु. एटलीस्ट जो हमारा ये बैच है, हमने भगवद गीता तो काफ़ी विस्तार से करा है. एंड आई गेस ईशोपनिषद आई हैव डन इट फॉर यूथ और फॉर कॉन्ग्रीगेशन ऑल्सो. ओके, फॉर यूथ इन द यात्रा. You were there in that yatra? Oh, okay. Really? Oh, Chitrakoot yatra? Okay. Okay, yeah, we had a 4-day camp or something. ठीक है. But nectar of instruction, I guess I have done, right? For the congregation in the yatra. I remember Mayapur yatra, we had done these few verses. Of course, they've... not Vacho Begum, right? Okay, we'll do that now. Fine. And of course, the one book that we have not touched at all so far in all this years of program is Bhakti Rasamrita Sindhu. So that will be a major emphasis. Of course, Isopanisad and NOI also. So generally, this whole program starts with Bhagavad Gita, and then it builds up to NOI, Isopanisad, Bhakti Rasamrita Sindhu. But क्योंकि अभी हमने हाल ही में दिसंबर के महीने में गीता रहस्य, गीता सार प्रोग्राम, और आप में से ज़्यादातर लोग गीता लाइव प्रोग्राम अटेंड करते थे, तो इसलिए आई थॉट विल हैव भगवद गीता लिटिल लेटर ऑन. विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद ईशोपनिषद. तो इस प्रकार हम हमारी जो पहली किताब रहेगी ईशोपनिषद. सो दोज ऑफ यू आर हियर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक. इसमें कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, वो भी आज का सब्जेक्ट मैटर है. सो विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, so you remember what you have studied. We'll discuss all that. So to begin, I'll offer prayers, and then we'll start our introductory program. And the focus is how to study Srila Prabhupada books effectively. Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजता सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. सो जनरली जब ये भक्ति शास्त्री प्रोग्राम शुरू होता है, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑनलाइन प्रोग्राम जनरली प्रेफर नहीं किया जाता. हम लोग जो पहली बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम उपनिषद. उपनिषद शब्द का मतलब ही है टू सिट नियर द टीचर एंड हियर इट. तो आप कह सकते हैं प्रो जी मैं तो स्क्रीन के बिल्कुल नज़दीक बैठा हूँ और आप स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं तो हो रहा है ना क्लास. सो नो दैट्स नॉट द आइडिया. सो विल सी हाउ इट गोज़. बट माई रिक्वेस्ट जो पुणे के हैं और जो इस एरिया के हैं, काइंडली try your best to come and attend. Otherwise, because this whole program will take approximately around 2 years, considering 1 month for book marathon. उसके बाद कार्तिक मास जहाँ पे ज़्यादातर यात्रा रहती हैं. अदरवाइज हमारी अपनी जो यहाँ की यात्रा रहती हैं तो तकरीबन करते करते 2 महीने निकल जाते हैं. तो बचे आपके 10 महीने. सो तकरीबन 20 महीने के अंदर हम ये सैटरडे संडे दोनों दिन अगर प्रोग्राम जारी रखें, सो वी विल बी एबल टू फिनिश. Of course, as I said, Bhakti Rasamrita Sindhu is the one book which I would like to really go a little bit more in details. उसमें हम कुछ ज़्यादा लेसन प्लान भी कंडक्ट कर सकते हैं, बट इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली दिस टाइम. सो आप लोग भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में जो रजिस्टर कर रहे हैं, यू काइंड ऑफ रजिस्टरिंग फॉर डिप्लोमा 2 साल का. ये 2 हफ्तों का नहीं है, 2 महीने का नहीं है. अभी तक हमारे प्रोग्राम रहते थे 3 महीने के, और लॉकडाउन में तो 15 दिन का प्रोग्राम रहता था. 15 days straight is over. So you have to be careful about it. इसलिए आज शुरुआत में आई थॉट विल हैव दिस सब्जेक्ट मैटर. थोड़ा अगर हम ध्यान से किताबों का अध्ययन करेंगे और श्रीला प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई किताबों का महत्व जानेंगे, सो हमारा वो उत्साह बना रहेगा इस 2 साल के प्रोग्राम के लिए. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड ऑल ऑफ यू दोज हु हैव रजिस्टर्ड, और जो रजिस्टर्ड का मतलब है जो लोग एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, वांट टू स्टडी मोर सीरियसली. एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ इस्कॉन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, लाइक chanting 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra, following 4 regular principles for certain duration. तो उसी के अनुसार आप सबने जिन्होंने एप्लीकेशंस भरी हैं, हमने उसी अनुसार एप्लीकेशन शॉर्ट आउट करी हैं. एंड आई बिलीव गौरधाम प्रभु हैड ऑलरेडी सेंड एन ईमेल आउट जो शॉर्ट लिस्टेड थे. सो अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो गौरधाम प्रभु विल हैव हिज नंबर शेयर विद ऑल ऑफ यू. यू कैन डू दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम. और अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन है, इसके बीच किसी का कोई प्रश्न है, इफ दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, इज देयर अ वे?
Okay, so you can let me know so we can have that. So register means जो certificate program के लिए they're gonna write exams, they're gonna learn shlokas and everything, and those who just want to attend and hear, so that's fine, they're also allowed, they can do that. So जो जो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे करते हैं, ये MIT की तरफ से पब्लिश्ड स्टूडेंट हैंडबुक है, जिसमें आपका सब सब्जेक्ट मैटर के बारे में समरी में बताया हुआ है. सो ये जो हमारा प्रोग्राम है, वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड भक्ति वेदांत राज विद्यालय. ये इस्कॉन पुणे का इनिशिएटिव है, विच इज़ इक्वलेंट टू VIHE और MIHE. सो उसी के अंडर विल बी कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम. अभी हमारी बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए हम MIHE की बुक यूज़ करेंगे. इसके अंदर आज आई गेस अभी वी डोंट हैव द बुक्स, तो आपको कल शायद ये बुक्स मिल जाएंगी. इसके अंदर सब कुछ बता रखा है, ओपन बुक असाइनमेंट्स. सो बाय द वे यू विल हैव ओपन बुक असाइनमेंट्स. इसमें दो प्रकार के असेसमेंट्स रहेंगे. एक रहेगा क्लोज बुक असेसमेंट एंड दूसरा रहेगा ओपन बुक असेसमेंट. क्लोज बुक असेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट मैटर को ढंग से समझना है तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स. वन इज थ्योरी, सेकेंड इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड तीसरा वैल्यूज. उसको नॉलेज स्किल्स वैल्यूज भी कहते हैं एक प्रकार से. सो जो आपके क्लोज बुक एग्जाम्स रहेंगे, we'll be announcing the details later on as we see as the program goes on. So ईशोपनिषद के लिए रहेगा, फिर NOI, फिर भक्ति रसामृत सिंधु एंड फिर भगवद गीता के लिए. So जो आपके क्लोज बुक एग्जाम रहेंगे, that will be entirely from Srila Prabhupada books and the purports. You just have to be careful, Shinana. I heard a clicking sound. So it's like before the earthquake happens. So okay, fine, whatever. That is for checking your theoretical knowledge. आपने कितना सीखा है, आपने कितना याद रखा है. उसके बाद है ओपन बुक एग्जाम, विच इज कॉल्ड एज ओपन बुक असाइनमेंट, जो आपको घर पे बैठ के करना है. घर पे बैठ के करना है मीन्स यू कैन ओपन द बुक, राइट द आंसर्स, बट नॉट कॉपी फ्रॉम अदर पार्टनर. सो अगर कोई कॉपी करता है, सो एज अ मैटर ऑफ इंटीग्रिटी द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बी कैंसल. सो बी केयरफुल. आप बुक में से पढ़ के जो भी अपने समझ के अनुसार करना है वो कर सकते हैं. सो दिस ओपन बुक असाइनमेंट इज लार्जली अबाउट एप्लीकेशन. याद है आप लोगों ने गीता लाइव प्रोग्राम जो हमारा बुकलेट था, उसके अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते थे, एंड द एंड विल हैव दिस माइंड ट्विस्टर्स. That is called as open book assignment. It's not like in open book assignment question would be asked, please write down the translation of chapter number 2, verse number 14. What is meaning of assignment? There will be an application. How do you apply Mata Spashasu Kanteya Shitoshna? How do you apply the quality of tolerance in your life? And there will be a situation given. That's about that. And then you will have shloka test, shloka assessment. So you'll have to learn shlokas. I wanted to include the text about what is the importance of learning shloka. But please don't get frightened. Sometime I have seen, at least in congregation, there's a big fear of shlokas. I remember one of the earlier batch, वो लोग श्लोका टेस्ट के समय इतने घबरा जाते थे ना. कॉलेज में होता था ना ओरल टेस्ट, तो पसीने छूटते थे करके, या जॉब इंटरव्यू होता था. कुछ नहीं है, बड़े सिंपल श्लोक हैं. ईशोपनिषद पहली बुक में से सिर्फ 2 श्लोक ही है. So there's not much effort. So we'll have oral test. That will be a shloka test like this. And आपके जो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, विल बी कंडक्टिंग एट हियर एट द सेंटर. और जो पुणे में जो दूसरी जगह पे रहते हैं, जिनके लिए हिंजेवाड़ी दूर रहेगा, उनके लिए टेस्ट, इफ दे वांट दे कैन कम एंड राइट हियर, और एल्स दे कैन राइट एट पुणे टेम्पल. तो उनकी जो डेट्स होंगी, our coordinators, they will announce on the group, and then you can go and write your exam then. And जो ऑनलाइन है, जिनका ऑनलाइन रहेगा, तो उनके लिए आई बिलीव गौतम प्रभु ईमेल में सब डिटेल्स थी. सो जो ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, सो आपको अपने मेंटर, और एल्स अगर आप टेम्पल के पास रहते हैं तो टेम्पल अथॉरिटी से यू हैव टू गेट एन ईमेल. आपको वो ईमेल एड्रेस दे रखा होगा ईमेल के अंदर, आपको हमें ईमेल करना है. और जब यहाँ पे डेट अनाउंस होगी एग्ज़ाम की, उसी दिन आपको भी एग्ज़ाम लिखना होगा. एंड दैट एग्ज़ाम हैज़ टू बी रिटन अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट मेंटर, और सम इन्विजिलेटर हैज़ टू बी देयर. और एग्ज़ाम लिखने के बाद, जैसे सोचिए अगर 11 से 12 बजे का स्लॉट है संडे आफ्टरनून, सो आपको भी 11 to 12 एग्ज़ाम लिखना है, और विद इन हाफ एन आवर
उसका एग्ज़ाम का स्कैन कॉपी वी शुड गेट इट ओवर ईमेल्ड. So this is the criteria जो BBRB के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने रखा है. So I hope it's comfortable for all. So please आप एग्ज़ाम डेट के ऊपर ज़्यादा negotiate मत करिएगा, because it'll be very difficult to manage the local crowds and the online. And online में तो फिर इतने अलग अलग जगह से लोगों ने रजिस्टर करा है, so we'll have the same date. अगर किसी कारणवश किसी की कोई इमरजेंसी है नहीं कर पा रहे हैं तो वी कैन मेक अ वेरी एक्सेप्शनल केस, but not a regular case. So that's about assessments, and that's a little introduction about the book, about the course. इसके बारे में किसी का कोई clarification about the administration? Anything online? हरे कृष्ण. आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? You look in anxiety. Okay. There is a question from one of the. Oh, we can have the mics. They can hear it. Please pass on the mic. There is a query I received over the WhatsApp from one of the Prabhu. He is not available on Saturday and Sunday because his weekend off is on Monday. Okay. So in that case, because we have some attendance and the percentage also mandatory for the exams and all, so how he can manage, he just wanted to clarify on that, whether it is possible something or not. अब ये तो बहुत ही peculiar केस है कि आप क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे. So we'll discuss that later on. We'll see what can be done about it. Because we're going to read the 12 aims of the Shastri study. So Prabhupada wanted just not that हम certified हो जाएं. There has to be a proper learning. And proper learning के लिए there has to be a question answer. अगर आप क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है. So regarding this question, so all the students who are registered for the program, they'll have this login portal on the Evolve Pune website. I don't think so I have access right now to it, but you'll get the access to it later on. तो वहाँ पे आपके लिए you'll have the course. In such cases, all the recordings of this would be posted up on this Evolve Pune website under the school student portal. अब वहाँ पे जाकर वहाँ पे कोर्स अटेंड कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं. एंड वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करने का तरीका रहता है. मे बी देन वी कैन कंसिडर, अगर हुआ तो कंसिडर कर सकते हैं. I will see for that. Anything else? Prabhu, there are participants who are not yet chanting 16 rounds, but they are interested in the course and in fact giving the exam also. But as per the prerequisite, they are not qualified. So Okay. they just wanted to know. Start chanting 16 hours from tomorrow. And if you do so, then let me know. We'll consider your case. All right? I'm not promising because I have to still take permission from our BV, Bhaktivedanta Rajvidyalaya, BVRV administration. But मैं प्रयत्न करूँगा. But आपको 16 माला नाम जप करना is a requirement. Because शास्त्रिक एजुकेशन, अगर आपका शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की इतना इच्छा है, so at least उससे पहले थोड़ी तो ट्रेनिंग होनी होगी, and for that chanting 16 hours is required. One reason is to avoid misuse of the knowledge. Anything else? Prabhu, similar case, you can say that people who have recently started, maybe less than 3 months or so. By the way, we'll also have, according to the administrative rule, आप लोग का एक साधना चार्ट भी रहता है, ट्रैकिंग की, भक्त जुड़े हुए हैं, उनकी साधना ढंग से चल रही है. आई विल शो यू. यहाँ पे मार्क्स भी हैं. आप साधना टाइम पे सबमिट करेंगे तो आपका 5% मार्क्स इज बिकॉज ऑफ ये साधना कार्ड. आई एम नॉट मेकिंग इट अप. मैंने आज ही देखा somewhere in this book or in the teacher's manual it was there. Yeah, it's over here. Yeah, chart would be in the end. So yeah, that's needed. ठीक है. Those who have started chanting 16 hours now, or those जो कल से शुरू करने वाले हैं 16 माला, so we'll discuss the case separately. Anything else? Okay. So maybe for all those, maybe we'll send them an email if they give us a confirmation on that. So then, yes, we'll.
note down their We'll, names and yeah, then we'll see you for that. yes. Fine. Okay. Okay, so I guess this was a little introduction how this program would be conducted. हाँ बोलिए बोलिए माइक पे बोलिए. You have to be quick. Hare Krishna, Prabhu. Yes, please. Prabhu, so I had one question which is already mentioned in the chat, which is the PDF. Can we get the PDF of the handbook? Yes, yes, yes. You'll get the course material. आपको course material मिल जाएगा. And another question was, so these assessments will be each assessment after we complete a book, or it will be together a single assessment at the end of 20 months? No, not like that. आपका there are lesson plans. Well, it depends how we want to do it. आपका Isopanisad there are only 18 shlokas, so we'll have it at the end of it. At least closed book examination at the end of the book, open book assignment as we progress, we can give you in the between. But आपका जब book complete होगा उससे पहले उस book का exam होगा. And shloka test तो क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही shlokas हैं, maybe I can increase the number of shlokas. As a teacher, I have the freedom to tighten you up. So 2 श्लोक की जगह 5 श्लोक करते हैं. फिर श्लोका टेस्ट का फायदा हुआ ना. मैं समय लगा के आपके श्लोका सुनूंगा, 2 श्लोका सुनाने थोड़ा हो गया. बच्चों का भी प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों का प्रोग्राम होता है तो कम से कम 5 श्लोका तो देते हैं, राइट. बड़ों का है तो 18 है ना, तो 9 श्लोका, 9 श्लोका, नॉट दैट डिफिकल्ट. Anyways, okay, we will finalize that. ठीक है जय प्रभु. Yes, Prabhu. Hare. All right, so let's take a discussion on this. Oh really? Please go ahead quickly. You have to read on the mic, Prabhu. Nobody will hear it. दूसरा रिगार्डिंग लैंग्वेज, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मेरा प्रयत्न रहेगा हिंदी में कक्षा रहेगी, बट विल बी रीडिंग फ्रॉम इंग्लिश बुक ऑफ श्रीला प्रभुपाद, सो हिंदी इंग्लिश बोथ आर कवर्ड दैट वे. ओके, यस प्लीज. जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन दे से देयर नेम एंड Hare Krishna. Ritika Mataji, you can ask question. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, I have recently started chanting 16 rounds. It's been like almost 2 to 3 months to me, and I'm not so much touch into to the local temple because it's far away from my place, 18 kilometers. So I've been there only twice. So the only problem is that I know the name of the Prabhuji over there, but I'm not sure that he will send the email on my behalf. That I can attend the exam or something like that, because I have small kids, so it's not. I'm from Jodhpur, Prabhuji, Rajasthan, Jodhpur. Okay, fine. I'll talk to the temple president there. We'll figure out. All right. Gautam Prabhu, you can. Okay, no problem. We will discuss. We'll talk to them. Fine. Yes. Yeah. Okay, Prabhuji. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Anurag Prabhu has question that can Hare we get Krishna. a copy of books? जो यहाँ पर लोकल हैं they'll get a hard copy, और जो out of Pune है they can go to the printing shop and make a hard copy. Anything else? Okay, thank you. Hare Krishna. So it'll be quick now because we have another program after 5:30, so I'll give you the quick overview. Okay, this looks small. We need something to lift it up, but not right now. Next time, because it's too low. Or else, if I sit next time onward down, it's comfortable, na? All can see because it's not such a huge crowd, because it's a little difficult. Okay. So these are the few things. I can share this notes with you after the class. तो यहाँ पे प्रमुख तरीके से प्रमुखता शिला प्रभुपाद के भक्ति शास्त्र के ऊपर क्या कोटेशंस या क्या कमेंट्स हैं वो लिखे गए हैं. ये मैंने इसी बुक से लिया है, MIH की जो बुक है वहाँ से. व्हाट इज शास्त्रिक स्टडी एंड 4 शास्त्रिक डिग्री, जो हमारी ये टीचर्स गाइड है वहाँ से लिया, ये बताने के लिए शास्त्रिक स्टडी क्या है और भक्ति शास्त्री के अलावा इस्कॉन में और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं. उसके बाद वाई आर शिला प्रभुपाद बुक्स इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल, उसके बारे में चर्चा रहेगी. एंड देन प्रिपरेशन स्टेज, इसका मतलब है प्रभुपाद की किताब पढ़ने से पहले सबसे पहले तो प्रभुपाद की किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, क्या आवश्यकता है उसकी, और दूसरा प्रिपरेशन स्टेज में कैसे पढ़ना चाहिए.
how to prepare our consciousness. For an example, कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आपने श्लोक रिसाइट करा, ट्रांसलेशन पढ़ा, परपट पढ़ना शुरू करा, पहला पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ, और परपट खत्म होते ही आप यही भूल जाते हैं आप क्या पढ़ रहे थे. कितनों का एक्सपीरियंस है, हाथ खड़ा करो. यू थिंक अबाउट ये क्या ट्रांसलेशन किसका था, क्या था. नाउ वर्स्ट वुड बी अगर कोई बोले बुक कौन सी है. बड़ों पर से बड़े रीडिंग भगवद गीता, है ना. सो कैसे अपनी चेतना को तैयार रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस मूड के बारे में विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी एंड कुछ कमेंट्स ऑन द यूनिकनेस ऑफ शिला प्रभुपाद बुक्स. So some of these are my personal notes just to help us, and कुछ हमारे other devotees who have compiled notes कि प्रभुपाद की books कैसे पढ़ी जाती हैं. It's a conglomeration of that. So we have a mic. I'll read out shlokas and others can read the English statements, and then I'll give you the brief of it. So this is a verse. सिद्धांत बल्य चित्ते ना करे आलस, या हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस. इन एसेंस इस श्लोक में बताया गया है जो भी सिंसियर या जो भी स्टूडेंट है उसको सिद्धांत या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आलस नहीं होना चाहिए. प्रभुपाद ने भगवद गीता के तात्पर्य में लिखा है, नॉट ओनली प्रभुपाद, इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, तत्शृणु चैप्टर 7 वर्स नंबर 1, उसके बारे में आगे आई हैव रिटन द पर्पट आल्सो. So that's the point here. A sincere student should not neglect the discussion of such conclusions, considering them controversial, for such discussions strengthen the mind. Thus one's mind becomes attached to Krishna. Please read the letter. Anyone who has a mic? We can keep it open. Okay, I'll be quick. Hare Krishna. So in my book, the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you, and by this process, your spiritual life will develop. So what is the idea behind having this kind of a program जहाँ पे आपके exam हो, assessments हो? How many of you agree if there are regular assessments, we'll stay on track, we'll be forced to study? That's the idea. इसलिए प्रभुपाद ने ये इस प्रकार के डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करे. So that's one idea. हमने भी कुछ साल पहले प्रयत्न करा था असेसमेंट वाले प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, बट क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर नहीं था तो आप लोगों ने कुछ समय तो करा, और कुछ समय के बाद बुक भी भूल गए, क्लास तो खैर लॉकडाउन के कारण बंद हो गई गीता लाइव. बट या दैट्स होल आइडिया. शिला प्रभुपाद ऑन भक्ति शास्त्री एंड सिस्टमैटिक स्टडी. These are some quotations. I'll read one and the other devotee can read. Srila Prabhupada says, I wish to encourage all my disciples to very carefully learn this philosophy. Prabhupada writes, in January of 1970, we'll be holding an examination among all of our students on this book. Those who will pass shall be awarded with the title of Bhakti Shastri. With these examinations, I wish to encourage all my disciples to very carefully learn this philosophy of Krishna consciousness, because there is so many preachers who will be required to bring this message to all of the corners of the earth. अगर हमें किसी को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताना है तो सिर्फ ये कहना कि श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैं, आपको भी एक्सपीरियंस है कि कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा. और आज के समाज में तर्क वितर्क बहुत होते हैं, तो उनको किस प्रकार से कन्विंस करें, किस प्रकार से बताएं. और अगर आप जवाब देते समय शास्त्र में से कोई श्लोक कोट करते हैं तो सामने वाले का विश्वास बढ़ता है. दैट इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज इंडिकेटिंग कि इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट और इसके प्रचार के लिए बहुत प्रीचर्स लगेंगे. फॉर दैट वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम्स. प्लीज रीड द नेक्स्ट वन. Become all good preachers, and that depend on studying the book nicely. So Prabhupada, right? I am very pleased that you are inclined to read and study. So I am very pleased that you are inclined to read and study our book with seriousness. Thank you very much. So continue it with wholeheartedly. We want good preacher also. Preaching should not depend on me only. My disciples should become all good preachers, and that depend on studying the book nicely, so that you can adapt at the right consciousness.
So that's Conclusions. right conclusions. Fine. I'll read out this interesting one. I will never die. I live in my books. The day after Prabhupada arrived, a press conference was held, with all the major newspapers and television stations represented. Sitting under the glare of TV lights in the large Berkeley Temple Hall, Prabhupada was faced with the question, what will happen to the movement when you die? Srila Prabhupada answered back immediately, I will never die. All the guests and devotees cheered, and Prabhupada continued, I live in my books. I have written on the quotation ahead. Tamal Krishna Goswami Maharaj mentions how Srila Prabhupada, you remember that famous incident, Janmashtami celebration at New Vrindavan. And Prabhupada asked his disciple, कि आप Krishna book से पढ़िए. And, Prabhupada had written the book. Doesn't Prabhupada know the content? And Prabhupada would love to hear. Many different occasions are there. तो एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप ही ने तो किताब लिखी है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं इसको अपनी किताब को पढ़ने के लिए? तो प्रभुपाद said, no, I have not written this book. This is written by Lord Shri Krishna. ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं. जैसे तमल कृष्ण महाराज बताते हैं कि इंसिडेंट की कि कैसे श्रीला प्रभुपाद तमल कृष्ण महाराज को एक बार बोलते हैं कि पिछले 3 दिनों से मैं एक शब्द का मतलब ढूंढ रहा हूं एंड कृष्णा हैव नॉट रिवील्ड. मतलब क्या है कि श्रीला प्रभुपाद हैड टू ट्रांसलेट संस्कृत इनटू इंग्लिश. Now, Sanskrit is a mother of all language. बहुत बहुत विशाल लैंग्वेज है. उसमें से अगर आपको इंग्लिश जो बहुत ही आई हर्ड देयर आर 60-70,000 वर्ड्स वोकैबुलरी समथिंग, उसमें इतने छोटे जिसमें शब्दकोश हो, उसमें अगर किसी संस्कृत वर्ड को ट्रांसलेट करना इज अ डिफिकल्ट जॉब. जैसे मित्र, संस्कृत में अलग अलग डेफिनेशन है मित्र की, अलग अलग परिभाषा. इंग्लिश में जहाँ तक मुझे पता है 2 ही हैं, फ्रेंड एंड एक्वेंटेंस. तो हाउ डू यू प्रॉपरली ट्रांसलेट? सो उस समय प्रभुपाद कहते हैं मैं पिछले 3 दिनों से एक शब्द का इंग्लिश में अर्थ ढूंढ रहा हूँ. लॉर्ड श्री कृष्ण हैज नॉट रिवील्ड. सो लाइक दिस देयर आर मेनी इंसिडेंट्स. सो अदर्स आई विल गिव द नोट्स, आप लोग पढ़ लीजिएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज अ शास्त्रिक स्टडी? By the term Shastric study, we refer to the study of the Vedic scriptures, Shastra, and specifically the books of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So ISKCON में 4 शास्त्रिक programs और 4 शास्त्रिक degrees हैं. उससे पहले let's take a look at one of the letter जो श्रीला प्रभुपाद ने अपने disciple स्वरूप दामोदर प्रभु को लिखा था. Can someone else read? Please read out. Please keep it on, otherwise take time. My dear Swarup Damodar, please accept my blessings. I beg to thank you for your letter dated December 26, 1975, and I have noted the contents carefully. Your plan to have the Bhaktivedanta Summer Institute in one of our farms is a very good idea. Brahmana means Pandita. Therefore, I am suggesting examinations Bhakti Shastri for all Brahmanas based on Bhagavad Gita, Shri Upanishad, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, and all the small paperbacks. Bhakti Vaibhav, the above plus first 6 cantos of Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta. Next is Bhaktivedanta. So I'll give the summary from 7 to 12, and Akhri is Bhakti Sarvabhauma. That means Chaitanya Charitamrita. And Prabhupada say these titles can correspond to entrance. So Bhakti Shastri is the entrance program. Then BA, MA, and PhD like this. So this is the kind of programs that we have at ISKCON that we offer. Bhakti Shastri, then Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, and Bhakti Sarvabhauma. So like that. So first, when a person can finish his Bhakti Shastri, then he goes for the second program, which is Bhakti Vaibhav like this. So this is an interesting statement. What is the whole idea behind this, designing this course? Prabhupada ने ऐसा क्यों करा? कारण क्या है? Please read out somebody the aim of creating this courses. To mature the evolution of Brahmanical Krishna conscious leadership, whose members are expert in the study and assimilation of Shastric knowledge and proficient in its application in their own lives, in helping others, and
in perpetuating the mission of perpetuating the mission. Srila Prabhupada. अपने खुद के जीवन को सुधारने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, और ये शिला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए. सो व्हाई आर शिला प्रभुपाद बुक्स इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल? तो यहाँ पर आई हैव कोटेड द पर्पट फ्रॉम भगवद गीता 7 चैप्टर वर्स नंबर 1 एंड वर्स नंबर 2, जहाँ पे शिला प्रभुपाद अपने इस 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, छठा अध्याय 47वां श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतर आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करता है, भजन मतलब पूजा भी होता है, भजन भी होता है, तो जो मेरी वर्शिप करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है. तो प्रश्न बनता है श्रद्धा कहाँ से आती है? उसका उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, अर्जुन श्रद्धा आती है ज्ञान से, इसलिए अब मुझसे आप सुनो. ये दिव्य ज्ञान जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है उसको मेरे से सुनिए. जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, ज्ञान से श्रद्धा, श्रद्धा से स्मरण और अब्जॉर्प्शन. उस प्रकार व्यक्ति की प्रगति होती है. शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं. Would anyone like to read? Bhagavad Gita 7.1. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by the prescribed devotional service in my mind different form, and of which Shravanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, Tachshunu, hear from me. Yes. no one can be greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna consciousness. One has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee of software of puffed up with academic education. तो यहाँ शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक कोट करते हैं. It'll take time. So इसमें प्रभुपाद बताते हैं कैसे भगवान शिला व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे प्रगति कर सकें, उसके बारे में वो रहस्य बताया गया है. सारांश: टू हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम वैदिक लिटरेचर्स or to hear from him directly through the Bhagavad Gita is itself righteous activity. And one who hears from Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best wishing friend and purifies a devotee who constantly engages in hearing of him. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in the devotional service of the Lord. So सारांश यही है, जब हमारा रेगुलर हियरिंग प्रोग्राम श्रवणम, प्रहलाद महाराज के द्वारा जो 9 प्रोसेस भक्ति के बताई गई हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम से शुरुआत होता है. तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में और श्लोकों में बताया गया है, जो श्रवणम है वो या तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो परंपरा तैयार करी गई हैं, उसमें जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे सुनने में ही फिर व्यक्ति का कल्याण होता है. नॉट फ्रॉम एन अपस्टार्ट, Prabhupada said, not from an academic, not from a scholar. हो सकता है कोई PhD किसी ने करी हो वैदिक शास्त्र के अंदर, पर जब तक व्यक्ति का कैरेक्टर नहीं है, जब तक व्यक्ति इन नियमों को खुद अपने जीवन में पालन ना करे, तो उसके ज्ञान का कोई फायदा नहीं है. इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ बताते हैं. So therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. तो हमारा जो विषय चल रहा है वो ये है, why to study शिला प्रभुपाद बुक्स. शिला प्रभुपाद की जीवन शैली के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे शिला प्रभुपाद ने अपना जीवन भक्ति के प्रचार में लगाया और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण करके ऑलमोस्ट समस्त विश्व को भक्ति के मार्ग से जोड़ा. तो शिला प्रभुपाद के द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं, द बुक्स, दे आर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा's मैसेज. तो प्रभुपाद की किताबों की विशेषता क्या है? एज इट इज. इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता का नाम दिया एज इट इज. अगर किसी को किसी भी फिलॉसफी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो आप प्रभुपाद की किताब को पढ़िए. अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मायावाद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म
और बचा कुचा कोई धर्म अगर रह गया है ज़ोरेस्ट्रियन आपको सबके बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त होगा. एंड दैट्स द पॉइंट मेड हियर. कंप्लीट नॉलेज, ये 7.2 7 चैप्टर सेकंड वर्स पपट है ये. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of the fourth chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Very important point. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and the only object for meditation in all types of yoga practice. When the cause of all causes becomes known, then everything becomes knowable, becomes known, and nothing remains unknown. So each word Srila Prabhupada used in his purports is coming directly from spiritual world. These are his devotion ecstasies. This is how one of Srila Prabhupada's disciple commented once. जो शिला प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, असिस्टेंट थे, कि व्हेन आप लोगों को पता है हाउ शिला प्रभुपाद वुड वेक अप लेट इन द नाइट अराउंड 12 o'clock, ही वुड टेक रेस्ट फॉर 2 or 3 hours, 2-3 घंटे की रेस्ट के बाद, और फिर 12 बजे से लेकर तकरीबन सुबह 4 बजे तक शिला प्रभुपाद का ये नित्य कर्म था कि रात भर बैठ कर शिला प्रभुपाद ये किताबें लिखा करते थे. हाउ मेनी ऑफ अस हैव एन एक्सपीरियंस, एक लेटर लिखना भी हो तो बड़ी आफत आती है. हाउ मेनी ऑफ द एक्सपीरियंस, यस नो. और आजकल तो वॉइस नोट तो इतना रैम्पेंट हो गया है, अब तो टेक्स्ट मैसेज भी बंद हो गया है. राइट अ वॉइस नोट, लीव अ वॉइस नोट एंड गेट द मैसेज थ्रू. क्योंकि बोलते तो हम ज़्यादातर हमेशा हैं ही, तो बोलना आसान होता है. जो लिखना होता है तो योर स्पीच इज काउंटेड बिकॉज इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, और मीनिंग यू कांट जस्ट राइट एनीथिंग. इट्स अ बिग टास्क, इज नॉट अ इजी थिंग. शिला प्रभुपाद जो 70 साल से बड़ी उम्र थी प्रभुपाद की, एंड इंग्लिश वॉज नॉट लाइक हिज फर्स्ट लैंग्वेज. ऑफ कोर्स इंडिया में पढ़े थे वो, बट इतना सब कुछ करना इज नॉट एन ईजी थिंग. सो आई ऑलरेडी शेयर दिस पर्टिकुलर पास टाइम विद तमिल कृष्ण महाराज, जहाँ प्रभुपाद कहते हैं द कृष्णा इज नॉट इंस्पायरिंग हिम टू कम अप विद सुटेबल वर्ड. एंड आई वांट टू जस्ट प्ले दिस वन वीडियो. आप जानते हैं कैसे शिला प्रभुपाद का जो आखिरी ट्रांसलेशन था वो था ब्रह्मा विमोहन लीला का, एंड कैसे शिला प्रभुपाद अपने अंतिम दिन से पहले 1 महीने से शिला प्रभुपाद ने कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खाया है. ही इज जस्ट मेंटेनिंग हिज बॉडी ऑन अ लिक्विड डाइट. और उस समय उस परिस्थिति में भी शिला प्रभुपाद निरंतर ट्रांसलेशंस करते रहे. ये कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती. ये किसी साधारण मनुष्य के लिए, चाहे कितना बड़ा रेसलर क्यों ना हो, अगर सिर दुखता है तो वो भी काम नहीं करने वाला है ना. और सोचिए यहाँ व्यक्ति ने 1 महीने से क्योंकि सॉलिड फूड खाया नहीं है, लिटरली बेड रिडन, हाथ नहीं उठ सकता. प्रभुपाद को दर्शन, भगवान के विग्रह के दर्शन कराने के लिए प्रभुपाद को पालकी में बिठाकर लेकर जाया जाता था. पर इस समय भी, लेट पुट इट दिस वे, कभी तबीयत खराब होती है तो चेतना भी थोड़ी दूषित हो जाती है, हमारा सोचना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सोचिए प्रभुपाद की इतनी ऐसी फिजिकल कंडीशन है, इतनी खराब, उस समय व्यक्ति संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे कर सकता है. बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सही हेल्थ में भी होते हुए भगवद गीता इतना उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन कर देते हैं. तो सोचिए व्यक्ति इतना जिसकी तबीयत खराब है, हाउ कैन यू डू दैट. सो आई हैव इंक्लूडेड द लिंक एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो. सो लेट्स टेक अ कॉल हियर. ये जो वीडियो का लिंक है उसमें एक भक्त हिंदी में प्रभुपाद के वचनों को दोहरा रहा है, और अगर आप चाहें तो प्रभुपाद जी के इंग्लिश वचनों को सुन सकते हैं. तो मैंने कहा दोनों वीडियो मुझे मिल गई हैं तो वोट ले लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो हिंदी में है तो थोड़ा तो होना चाहिए. व्हाट डू यू वांट टू हियर डायरेक्टली व्हाट प्रभुपाद सेड, और द ट्रांसलेशन हिंदी में रहेगा करके. ओके, ऑल द बेस्ट. हाँ, नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, हाँ. Oh, that is not working only. Any rest? So what about this notes and everything? Fine. I have to start any desk. No, leave it. It's getting late now. We'll share the video. They can watch it later on.
Volume. This is karma, karma hetu. Karma hetu. When we devotion outside we get a different nature, and if we engage in the basis of sense gratification, they don't change. The karma is that they open up the hetu. Yeah. And according to the association of divine nature, we get a body. Karanam guru sammasya sapasat janmayam. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then on life will be successful. And the last is the gunas, Satradeo, Jnana Vikshepa, Moha, Hetavaha. Is it clear? समझ आ रहा है? Well, if we live with good association, then we cultivate knowledge. That means association. And man is known by his company. So, if we have the chance of association with devotee, then our Prabhupada teacher will only by hearing, by discussion, seeing Bhagavatam, this Ragavantam is subdued. Then Satsang event Nishtaprayas over this. Wisdom harmless. Then we Jatavantam cannot do us harm. Therefore, Varnashram Dharma is so essential that people remain in Sukha. Someone Bhagavan Rajasthan Bhava increases lust and greediness, and that implicates a living entity to exist in this material world in many, many forms. That is very dangerous. Therefore, they should be brought into such a one that is establishment of Varnashram. I'll pause here. The link is there in the notes. You can watch it later on. So just one example, this is one of the last dictaphone recording that Srila Prabhupada did. And it leaves no doubt behind about the consciousness. Srila Prabhupada की चेतना इस समय प्रभुपाद की आंख भी नहीं खुल पा रही है
and still he is quoting the shlokas. और उनके संग जो भक्त हैं वहाँ पर, he is a Sanskrit scholar and his part was to make the transliterations. तो वो संस्कृत पढ़ रहे हैं, 10th कैंटो का जो संस्कृत है, और वहाँ से और प्रभुपाद उसको सुनकर उसके ऊपर कमेंट्री दे रहे हैं. So that's the point. We are discussing the subject, how to study and why to study. So let's move forward. Let's do a quick summary of remaining topic. So daily reading is as important as daily chanting. And to say busy schedule is no excuse. So this is another reason why Srila Prabhupada was too keen कि इस प्रकार का एक प्रोग्राम रहे, ताकि जब भक्तों पे प्रेशर रहेगा एग्जाम को लेकर तो एटलीस्ट डेली रीडिंग का स्केड्यूल तैयार होगा. By reading we become fixed in Krishna consciousness, free of doubt, and of course जो भी जितनी leading positions पे हैं उनके लिए तो necessary है. Would anyone read? Srila Prabhupada says. Srila Prabhupada says that no one can understand Srimad Bhagavatam if one associates with person associated with sex life. What is the meaning of it? This means that we have to be very careful in associating with karmis, as they immediately bring us to bodily consciousness and so can't understand. By hearing from pure souls, we can associate with and realize Krishna in the pages of Srimad Bhagavatam. In other words, because most of you here are professionals, आप लोग को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, हर प्रकार की जनता से मिलना होता है. So not only that person associated with sex life जो warning दी गई है, not only that, even karmic association is dangerous. तो अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए is very important we read book every day. Our thinking, which is absorbed now in these literatures, must be transferred to the Vedic literatures. The great sages, therefore, have written so many Vedic literatures, such as Puranas. Puranas are not imaginative, they are historical records. In Chaitanya Charitamrita, there is a following verse: Maya Mukta Jivera Nahi Swatha Krishna Jnana Jivere Kripaye Kaila Krishna Veda Purana. Please read. The forgetful living entities or conditioned souls have forgotten their relationship with the Supreme Lord, and they are engrossed in thinking of material activities. Just to transfer their thinking power to the spiritual sky, Krishna Dvaipayana Vyasa has given a great number of Vedic literatures. So Vedas क्या है, क्या उसका subdivision I have written here, उसके बारे में हम कल भी चर्चा करेंगे जब introduction पढ़ेंगे. So सारांश यही है, we must always engage our mind in reading this Vedic literatures. Just as materialists engage their minds in reading newspapers, magazines, or so many materialistic literatures, we should also transfer our reading to these literatures which are given to us by Vyasadeva. So let's do a quick overview of the preparation stage. सबसे पहला point, we can't understand Krishna without rapt attention. So attention कैसे आता है, एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर. सो ये शांतु अंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्माणाम, भगवद गीता 7वें अध्याय 28वें श्लोक में. तो सारांश क्या है, जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होगा, भगवान के बारे में सुनना और उस ज्ञान को मन में रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. मन शुद्ध होने के लिए व्यक्ति के कृत और कर्म शुद्ध होने चाहिए. इसलिए प्रभुपाद एम्फसाइज क्या करते थे, कोई भक्ति के मार्ग का पालन करना चाहता है तो 16 माला नाम जप और 4 नियम, 4 regulative principles. So just to give you background why ISKCON boards of examination ये क्राइटेरिया डाला है कि कोई भी इस प्रकार ये शास्त्रिक स्टडी में भाग लेता है, so they should be practicing the principles. That's the point here. Second point, so we can't understand means we have to have this culture. 16 mala naam jap and 4 regulative principles. Second thing, to understand, hearing is a service, which means the way we sit in the class, the way we hear, it inspires the speaker also. Our attention, our participation, and this is actually a Paramatma to Paramatma connection. अगर जो सीकर है, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार बार जो प्रवक्ता हैं, जो उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछने वालों की प्रशंसा करते हैं.
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हैं, सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि की प्रशंसा करते हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा करते हैं, उद्धव मैत्र मुनि की प्रशंसा करते हैं। जितनी भी अलग अलग कॉन्वर्जेशंस आई हैं, क्यों? क्योंकि आप इतने उत्सुक हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, और आपकी उत्सुकता के कारण अब मुझे भगवान के बारे में याद स्मरण करने का मौका मिला है। सो व्हाट इज दिस परमात्मा टू परमात्मा कनेक्शन? आप में से कितने लोग का ये एक्सपीरियंस रहा है? कई बार हमारे मन में कुछ प्रश्न होते हैं और हम क्लास में गए हैं और अचानक हमारे बिना पूछे, पर हमारे मन में बड़ी तीव्र इच्छा है उस प्रश्न के जवाब के लिए, और जो प्रवक्ता है अचानक से उस प्रश्न का ही उत्तर दे देते हैं। कितने लोग एक्सपीरियंस रहा है? That's a beauty. That's a mysticism of Krishna consciousness. So we have to understand this. There's a Paramatma sitting. और उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रश्न ही ना पूछें। लगता है प्रभु जी के मन में परमात्मा नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। But the idea is to be attentive, and that inspires. That's a point. So Paramatma inspires. Second point should be done in person. Should be done in person मेरा मतलब यहाँ पे ये है, जैसे प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब क्या है? गुरु के सामने बैठकर सुनना। That was the Vedic पद्धति. So fine, we are doing something online, देखते हैं कैसा रहेगा। And okay, I have written expectation for local student, वो मैं पहले ही बता चुका था कि I'll really appreciate कि जो at least पुणे के हैं, जो हिंजवाड़ी आसपास के हैं, they come and attend it. How to do it? So hearing is a service, pure life. तीसरा, form a study group. तो at least आप लोग के लिए यहाँ पे already mothers का study group है. It'll be nice if men can also have a study. I'm just sharing some best practices. क्योंकि कई बार अकेले पढ़ने में आलस आता है, इच्छा नहीं होती, कई कारण होते हैं, और as sometimes we also recommend husband wife come together, before the day ends. आप लोग साथ में आके, अभी it's not going to be so difficult. Isopanisad is very simple that way. तो आप उसको पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए, डिस्कस करिए। That's a point. Prayers, the fourth point. तो अभी हम preparatory stage की बात कर रहे हैं, चेतना को कैसे तैयार रखना है। चौथा is prayer. Prayerful mood. हम किताब को या भगवद गीता या ग्रंथ को उठा के इस उद्देश्य से नहीं जाते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत महान हूँ, आई एम सच अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम दिस एंड दैट। नो, क्या कहा गया है? ये श्लोक आपके आदि लीला 3.1 में है। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स, वी कैन लर्न इट ऑल्सो। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संग्रणाति आकराव्रातत् आज्ञा सिद्धांत सन्मनिम्। I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. By the potency of the shelter of his lotus feet, even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the minds of revealed scriptures. जब तक गुरु की कृपा नहीं है, शास्त्र को समझना नामुमकिन है। So that's the point here. जब हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की उपाधि, I am a big professional, I am a PhD holder, I am a teacher, जो इत्यादि इत्यादि चीज़ें होती हैं, अगर उस उपाधि के उससे हम पढ़ेंगे तो समझना बहुत मुश्किल है। तो विनम्रता का भाव, इसलिए जब भी हम बुक पढ़ते हैं या कुछ भी आध्यात्मिक कृत करते हैं, यहाँ तक कि रेगुलर कृत भी करते हैं, उससे पहले हमेशा गुरु को याद करके, that's a development of consciousness. One of the last section now, how to study. That's a very important thing. कुछ टिप्स आपके लिए, आप किताबें कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी कॉन्वर्जेशन होती है, कोई भी आर्टिकल लीजिए या कोई भी स्पीच, उसमें ये 3 प्रश्न ये फंडामेंटल हैं। अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो आप किसी भी कॉन्वर्जेशन को, किसी भी लेक्चर को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। वाई, वॉट एंड हाउ। अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी हमारी ये चर्चा चल रही है उसमें वाई, व्हाट, हाउ क्या है, कोई बता सकते हैं? जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उसमें वाई नाम का क्वेश्चन है। वाई टू स्टडी शिला प्रभुपाद बुक्स, उसके लिए हमने आपको फाइनल लेसन का वीडियो दिखाया, प्रभुपाद के बारे में बताया, एनेक्डोट्स दिए। वाई टू स्टडी। व्हाट, व्हाट इज अ शास्त्रिक एजुकेशन, ये जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति शास्त्री का क्या है, राइट? एंड हाउ, हाउ टू स्टडी शिला प्रभुपाद बुक्स। इज दैट करेक्ट और नो? तो ये आप किसी भी कॉन्वर्सेशन, इनफैक्ट अगर किसी भी स्पीच को सही रूप से होने के लिए
we need this why, what, and how. We have few minutes, Madan. Okay, you can you can have them. Okay. All right. So as I said, we have another program. So fine. I'll just conclude with this. So by the way, this is the most important part, huh? I know the follow program is more important, but this is also important. Birthday party. But before that, let's have this party over, okay? So why, what, and how is a thing. Second thing, आप कभी भी, of course, I will not do an exercise, but it's a homework for all of you. Please go and read introduction. एंड कल करते हैं एक्सरसाइज. इंट्रोडक्शन आप पढ़िए और इन 3 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा. वाई, व्हाट, हाउ. प्लीज राइट डाउन जहां पे भी आपके पास है. आपको इन 3 प्रश्नों का जवाब ढूंढना है इंट्रोडक्शन में से. किस चीज के बारे में चर्चा की गई है प्रभुपाद किस बारे. इनफैक्ट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के हर पैराग्राफ में आपको इन 3 नहीं तो 2 नहीं 1 का तो प्रश्न का जवाब मिलेगा. अगर आप कहते हैं प्रभु जी किसी का नहीं मिला तो पैराग्राफ का मतलब ही नहीं है कुछ. These are the 3 fundamental questions आपकी स्पीच और राइटिंग के लिए. दूसरा, I'll give you my भगवद गीता. आपके देखा होगा तो उसमें हर जगह नोट्स है, ये सब बने रहते हैं. तो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड एनकरेज कि आप जब यहाँ क्लास में आए अपनी बुक लेकर आए, और जो ऑनलाइन भी हैं अपनी बुक लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ मैं इसमें प्रेजेंटेशन का कुछ नहीं करने वाला. वी गोना स्टडी पैराग्राफ पे पैराग्राफ, और जहाँ पे सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो वहाँ पे मैं समरी दूंगा. सो एक चीज याद रखने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस मेनी टाइम्स विद द बॉयज. आप जो भी पैराग्राफ पढ़ें, उस पैराग्राफ को अगर आप याद रखना चाहते हैं या बुक को याद रखना चाहते हैं, तो क्या है, आप उस पैराग्राफ के लिए टाइटल दीजिए. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट. सो दैट्स द सेकंड होमवर्क. आप अगर पूरा इंट्रोडक्शन पे कर सकते हैं, वंडरफुल. इफ नॉट, डू इट फॉर अ पैराग्राफ. और अगर आप करना चाहें, इट्स एन ऑप्शनल थिंग, आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एंड देन यू कैन गिव अ प्रेजेंटेशन टुमारो अबाउट द इंट्रोडक्शन. मैं आपको फिलोसफिकली इसमें क्या है, उसके अलावा वेदा से रिलेटेड चीज़ों का जवाब दूंगा, एंड यू कैन गिव अ प्रेजेंटेशन वाई, व्हाट, हाउ, और हर पैराग्राफ का टाइटल. उस प्रकार से एक ओवरव्यू हो जाएगा. सो विल हैव दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो. इट्स नॉट दैट आई विल बी स्पीकिंग, बट विल हैव सम असाइनमेंट जहाँ पढ़ें, सोचें, एंड देन यू वर्क ऑन इट. थर्ड थिंग, जब पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है, सी यू गेट द पॉइंट ना, दिस इज नॉट एन एकेडमिक स्टडी. आप केवल सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. शिला प्रभुपाद की इच्छा क्या है, वी स्टडी एंड देन शेयर द मैसेज. अब मैसेज शेयर करने के लिए वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू रिमेंबर इट. हम लोग पढ़ते चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं. तो ये सम टिप्स हैं हाउ यू कैन इस काइंड ऑफ मेमोरी नोट्स यू वांट टू कॉल इट. तीसरा, पॉइंट आउट एनालॉजीज, एग्जांपल्स एंड स्टोरीज. आप उसको मार्क करिए. एंड प्रभुपाद के जो एग्जांपल्स हैं, दे आर ब्रिलियंट एग्जांपल्स. वन ऑफ दैट फेमस एग्जांपल कि एक साधारण व्यक्ति को भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते, क्योंकि वो माया शक्ति से उसकी चेतना ढकी हुई है. अब ये आप साधारण व्यक्ति को कैसे समझें. और प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं, किसी को याद है? द क्लाउड्स. सन इज ऑलवेज देयर, बट जब घना बादल आता है तो हमारी आंखों को सूर्य नजर नहीं आता. उसी प्रकार जब व्यक्ति की चेतना पर ये प्रकृति का अंधकार छुपा होता है तो उसको भगवान के दर्शन नहीं होते. फोर्थ, गोल्डन श्लोकास, पर्पस एंड लाइन. दिस इज सम एडिशनल पॉइंट. कुछ पर्पस रहते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लोडेड, लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. उसको हम बार बार पढ़ें उतना ही अच्छा रहता है, तो उसको आप पढ़ते समय मार्क कर सकते हैं. दिस अ गोल्डन पर्पट. और उस पर्पट के लिए आपने टाइटल तो दिया है. Another thing that you can do, that I often do, is indexing. मैंने इसमें नहीं करा हुआ, I'll show you in भागवतम, क्योंकि छोटी बुक है. आप आखिरी पेज पे जाइए और इंडेक्सिंग करना शुरू करिए. What is indexing? आपने जो टाइटल्स लिखे हैं ना, टाइटल्स को वहां पे करके या नोटबुक पे बनाकर फिर यहाँ अल्फाबेटिकली टाइटल्स करिए. प्रभुपाद की हर बुक के एंड में इंडेक्सिंग होती है अल्फाबेटिकली. तो अगर आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट पर्पस हैं जो आपको मदद करते हैं दूसरों को बताने के लिए, अपने जीवन बताने के लिए, उसका अगर आपने इंडेक्सिंग करा ना, यू बिकम द डॉन ऑफ ईशोपनिषद. आई मीन यू हैव ईशोपनिषद ऑन योर टिप्स नाउ. अगर आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ प्रभुपाद ने वहां लिखा है, यहाँ लिखा है, you know where Prabhupada written, you'll open the book, the right page, the right paragraph, you'll say, see, Prabhupada says like this. That becomes a meaningful conversation.
this you can do with your husband, and husband can do with the wife. Close the book and paraphrase and explain to either person. आपने क्या पढ़ा? Make note on the book itself and preserve them. Note book पे बनाते समय you can use a pencil and a marker. Marker for highlighting it and pencils to notes बनाने के लिए. We'll do the demo tomorrow. What is Shastri study and all that? This I'll pause here. You can read it for yourself. So just three things. Every paragraph of Srila Prabhupada covers very vital some vital concept. And as जैसे मैंने कहा, एक preaching application और एक personal application. तो जब भक्त शुरुआत में जुड़ता है नया नया, तो उसको पर्सनल एप्लीकेशन ज़्यादातर उसको पर्सनल एप्लीकेशन के अनुसार देखता है. कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद पर्सनल एप्लीकेशन तो धूल में गई. अभी उसको सिर्फ प्रीचिंग एप्लीकेशन नजर आती है. क्लास में भी बैठते हैं पेन पेपर लेकर, तो कोई अच्छी सी स्टोरी, कोई जोक या कोई अच्छा सा पॉइंट, क्यों? ताकि मैं अपने स्टूडेंट को सुनाऊं. सो बोथ हैव एप्लीकेशन, बट दैट्स नॉट द राइट वे. सो प्रीचिंग and personal application. But the third, another perspective is a very important, and this is a homework because इसको समझाने में समय लगेगा. So यहाँ पे एक saying quote करी गई है तमिल ऑथर के द्वारा. तो उसके अनुसार तीन चीजें हैं. अगर हम जब शास्त्र पढ़ें, so three things should be there. Any Tamil from Tamil Nadu here? Oh yeah, okay. Pasitiru, how do we say that? Pasitiru. Well, please you translate in your language. English में यही है ना? Hungry कहते हैं, be hungry, right? Tani titu. Is that so? The second word, which means be alone. Is it visible? Is it tani titu? Tani titu. And the last is, you have to say that, just beyond my pronunciation. And be awake and alert. Awake रहना बहुत important है पढ़ते समय, हाँ? So these are the three things. So please read it out, and maybe one of you can give a quick presentation what this whole three things meant. Okay, we'll have our discussion tomorrow on that. And this is a reading assignment. Uniqueness of Srila Prabhupada books. क्या क्या है उसके कुछ points जो हैं, we have summarized that. So with that we pause here. So आज का ये एक introduction था about the program and also the administrative things. Abhishek, any one or two questions on this? किसी का? Not on the subject matter, वो कर लेंगे क्योंकि late हो चुका है. Anything else on administration? How this whole program will be conducted? Anything from here? Timing is fine? Well, there's no other option now. Okay, 4 to 5:30. All right. Okay, Abhishek Prabhu, I'll conclude. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. So please meet Gaudham Prabhu. So you let him know. So kal aapke paas ye book aa jaye. You have your booklet with you, and please do bring your Isopanisad copy. Mother Chitra is kept here, right? आप लेकर रहते हैं ना, हाँ. So आप गौतम प्रभु से मिलकर अगर आप पे ईशोपनिषद नहीं है तो बुक कलेक्ट कर लीजिएगा. And we'll start tomorrow from introduction. We'll discuss the introduction. और अगर आप में से कोई presentation करना चाहता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा. So I'll accordingly plan my schedule for the program and timings. Thank you. Hare Krishna. So it's time for Gaurati. We'll quickly get up and get started.